जब मेरी 3 बजे क्लास थी तो इन्हें देने की क्या आवश्यकता है? ये सब हटा लो, सब कप अप। ठीक है, जो कह रहा हूँ कर लो। ये रखे नहीं, क्या वो सफाई वाला आएगा वो उठाएगा। हटा दो ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा। और मेरे लिए एक चाय मंगा लो फटाफट। बोर्ड के आसपास का एरिया स्वच्छ होना चाहिए। करना है। Hello friends, in the series of BPSC previous year question, we are dealing with the topics and some of the questions which are very much important for your upcoming mains examination. So looking into the question, we see that define caste system, ये हो गया था यार, क्या रवि? What do you understand by the intergenerational gap, and critically analyze the relationship between intergenerational gap and youth unrest in India. So, what is intergenerational gap? Intergenerational gap किसे बोलते हैं? पहले आप इसे डिफाइन करिए. What is intergenerational gap and how it is being done? So, intergenerational gap is a gap between the two generations that are performing certain activities in their existence of society. For example, there are grandfather, grandmothers, there is mother and father, there is uncle and auntie, but in comparison to the new generation which is going to the colleges, which is going to the school, their thought is changing. They have their own belief due to modern applications and modernity advancement. They have their own orientation. They know what to do and in what perspective they have to do. So there is modernity in the mentality of new generation. So new generation, भैया जिसको बात करना है बाहर जाएं. So in the new generation, there is a difference from the older mentality. Older people have traditional way of thought, and newer people have the modern way of thinking. They are more scientifically oriented, and they are rational in nature. So this led to the gap between the two generations. And due to this thing, there is a question always asked in the UPSC and BPSC examination. Now, second part of the question, critically analyze the relationship between the intergenerational gap and youth unrest in India. Now, अब ये प्रश्न का एक अभूतपूर्व हिस्सा हो जाता है कि यूथ कैसे रिलेट कर रहे हैं चीजों से और इंटरजेनरेशनल गैप के साथ यूथ की क्या समस्याएं हैं. व्हाई देयर इज यूथ अनरेस्ट, व्हाई द यूथ इज इन अनरेस्ट, युवा वर्ग अनरेस्ट की स्थिति में क्यों है. व्हाई देयर इज क्योस इन द यूथ, व्हाई देयर इज फ्रस्ट्रेशन इन द यूथ, व्हाई यूथ इज प्रोन टू कमिट deviance, why youth is leading protest. And now quoting to the sociological thinker T.K. Uman जी की जब हम बात करते हैं
टीके ओमन बता रहे हैं कि यूथ आर सिग्निफिकेंट वे टू हैव सोशल मूवमेंट, youth are mobilizing the crowd, youth are demanding their rights, so youth are keys to social movement and protest, so therefore they are agents of social change. युवा क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। युवा सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। So you can write your answer in this way by providing some of the figures, some of the thoughts which are important for it, and quote with the example and the thinkers. So I believe you understand this topic. Thank you and see you in the next class. So, new question coming on the board. What is economic growth? And explain main causes of economic backwardness in Bihar. इकोनॉमिक ग्रोथ से आप क्या समझते हैं और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के क्या कारण हैं बिहार के संदर्भ में. सो लेट अस सी दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज हैपनिंग ड्यू टू some of the factors, and first of all we have to define it. So economic growth is defined as a rise in the value of goods and services produced in a country in a economic year. So economic growth is measured by the rise in value of goods and services. Goods and services produced in a fiscal year in a country. Now there is difference between economic growth and economic development. Now economic growth provides you the rise in the measures and rise in the values of goods and services. Economic growth जहां पे दिखाता है कि values कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, उनमें क्या बदलाव आ रहा है, they are rising or not. On the other hand, economic development is providing the fall or rise in terms of human development basically. So that is the difference, and it is broad and multidimensional measure. And economic growth is unidimensional and small measure. तो ये एक ही डायमेंशन का है और स्मॉल मेजर्स है. नाउ आप आंसर राइटिंग में ऐसे चीजों को जस्टिफाई करिए. व्हेन यू आर राइटिंग इकोनॉमिक क्वेश्चंस, ऐड सम ऑफ थिंग्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे से चीजों को ऐड करिए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, explain the main causes of economic backwardness in Bihar. बिहार में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के मुख्य कारण क्या हैं? So in terms of state of Bihar, there are numerous challenges. You see, the geographical location of Bihar lies between several rivers. So the constant flood and famine, flood in Kosi region, flooding 12 districts almost in a year. प्रत्येक वर्ष 12 जिले बह जाते हैं. Then infrastructural challenges there. Infrastructural challenge है. Why? Because of the state is lagging in the core domains of roads, in railways, in hospitals, and smart cities,
ऑल्दो हम देखते हैं कि बिहार की सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू काफी सारी प्लानिंग की है. दे हैव क्रिएटेड सेवरल काइंड ऑफ मेथोडोलॉजीज थ्रू प्लान्स एंड पॉलिसीज. Still, they lack such thing of development. Why? Because of rise of crime and political dominance. So यहाँ पे crime की रेट बहुत ही हाई है, and that leads to unplanned activities, stagnated projects, and lack of the political wills. Further, there is a bureaucratic choke or policy stagnation. The projects which are present with the government, they keep on piling with the government files. जो भी प्रोजेक्ट सरकार के साथ बने हुए हैं वो फाइल में जमा होते जाते हैं, and they keep on stagnating. Further, recently we see there was a crisis of NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग कर रही थी विद द पीपीपी मॉड्यूल. तो उनमें क्या हो गया, क्राइसिस आ गई. एंड एग्जांपल इज IL&FS, infrastructure leasing and financial services, which cost around 12,000 crores, जो कि पूरी तरह से लॉस में चली गई, जिसके चलते NHPC, NTPC, NHRC and several other projects derailed in the state of Bihar, and that is another major cause of stagnation of development. Now, so I hope you understand the question, और आप अच्छे से इसे लिखिए अपनी कॉपी में, get the good marks. Thank you and have a nice day. धन्यवाद. ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? आप चाहे रहने दो, फिर बाद में, चलो बाद में. So friends, we were discussing about some of the important questions in the series, and let us see the another question in this part. So what is rural development? The next question coming on the board is rural development, यानी कि ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? What do you understand by rural development? So ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है? You should start with the independence period. In what happened in 1950? What projects were there? और उनको कहाँ तक implement किया गया? Where they were lagging? So there was community development project, CDP or CDM. Then there was 5 years planning, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई. इसमें आप देखते हैं महालनोबिस प्लान, then there is industrial plan and so on. Then rural development aims to cater the needs of रूरल सोसाइटी. अब सोशियोलॉजी के पेपर में आपको थोड़ी रूरल सोसाइटी सोचनी होगी. रूरल सोसाइटी इज मेनली एग्रेरियन सोसाइटी. सो गवर्नमेंट नीड्स टू डेवलप एग्रीकल्चर थ्रू द मॉडर्न टूल्स एंड फर्टिलाइजर्स to improve the productivity through agricultural produce. Then it is also depend on pisciculture, bovine breeding, then rural economy is based on dairy products. Further, it also needs roads connectivity, there should be electricity, there should be health and hygiene facilities. ग्रामीण विकास के लिए हमारे पास मूलभूत सुविधाओं का होना मुख्य रूप से आवश्यक रहा, जिसे हमने आजादी के बाद के काल में देखा, and that created a numerous kind of change in Indian development. Now, there was community development program which seemed to be less productive. फिर हमने देखा there was a milk revolution, and that was through Varghese Kurian project. So that was a white revolution. And after that there was a green revolution, there was blue revolution in terms of PC culture. So add these things in your answer.
And the next part comes with new strategies of rural development in India. What are the new strategies to develop the rural factors? Now, as India has gone through period of industrialization, औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, तो अब क्या चाहिए गांव को? After setting off industries, village as village republic, महात्मा गांधी कहते हैं इसे विलेज रिपब्लिक, जो कि ग्रामीण गणराज्य है। ग्रामीण गणराज्य कहने का ही मतलब है कि इट इज फुल्ली कंपैटिबल एंड सेल्फ इक्विप्ड विलेज इन इटसेल्फ. It has its own machinery, it has its own mechanism, and it can go for its own development. Now, what is the thing in the village development? That it provides various facilities of employment. So there was trisem scheme in 1978-79. There was trisem scheme training the rural youth. ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्राइसेम स्कीम लाई गई. देन देयर वाज सर्व शिक्षा अभियान टू इम्प्रूव द एजुकेशन ऑफ द विलेज पीपल and rural youth. Then there was Manrega. Yes, UPSC has asked many questions from Manrega. That is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. So what are the main features of Manrega? The 100 days of paid employment is provided at the rural level. मनरेगा में 100 days का पेड एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है. And there is facility for ration card also. So there was a Bapu Jam facility. And what is Jam? You know, Jan Dhan, Aadhaar and mobile. So every individual living in a village should have a Aadhaar connectivity. They must have a passbook, they must have a bank account, and which is also linked with the mobile. ग्राम में रहने वाले सभी ग्रामीणों के पास एक मोबाइल खाता होना चाहिए जो कि बैंक से कनेक्टेड हो, राशन कार्ड से कनेक्टेड हो और मोबाइल से कनेक्टेड हो. Now these things were seen in the Indian rural development. Still we are lagging at somewhere, and due to which government also developed NSQF, that is National Skill Quality Framework. क्या है ये? NSQF, National Skill Quality Framework. इसके अंतर्गत जो भी ITI सेंटर हैं रूरल एरियाज में, वहां पे ट्रेनिंग दी गई. और क्या बनाए गए? जो भी एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि स्टार्टअप्स को डेवलप किया गया. तो गांव में जो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग थे, कोई लिज्जत पापड़ बना रहा है ना, और कोई डाली बना रहा है, there is some bamboo products and there is some masala packing. ये सारी चीजें विलेज लेवल पर शुरू की गई. So these are village economic model. Still we are finding many things to be done. हम देखते हैं कि आगे चल के और कैसे विकास संभव है. So write your answer in this systematic manner, conclude very well, and quote every answer with the example. Thank you. Last question. चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पी लीजिए उसको. अरे कोई बात नहीं. Population education. So friends, we are discussing the previous year question of BPSC series,
In this series, we are looking around the important questions that are asked in the BPSC examination and further which are probable to come into the examination. So, looking into the question, there is a question that is define population education. जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए. Why the question has been asked? कमेंट बॉक्स में बताइए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है भारत में? Because the population has played a crucial role in the development of country. The population is like a giant mammoth elephant. It's spreading around India. So population has created so many issues, so many challenges to the government. It is lagging in the development, it is lagging in education, it's lagging in healthcare services. Therefore, the question asked is define population education, and it is also added in the course book of your syllabus for BPSC and UPSC examination. So, population education comprises of demography, aging, mortality, productivity, sex ratio, unemployment, and budgeting, then healthcare, then urbanization. These all things are part of population dynamics. Now, population dynamics is forecasted through the census. तो हम सेंसस के आंकड़े को देखते हैं कि पॉपुलेशन कैसे वैरी कर रही है, महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है, is their maternal mortality rate high or low, how is the child are getting birth or dying, how is the female population is performing, how is the productive age of people. So you see, we are commenting on the world platform that India is having a demographic dividend. So this is greatest factor of India's uh, push up on the global platform, that is demographic dividend. अब demographic dividend से हम क्या समझते हैं? The age of working population from beginning from 20 years to 45 years, or the age of population which is performing productively in various economic activities are constituting demographic dividend. अगर किसी के पास अच्छी डेमोग्राफी है, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, skilled persons हैं, then they can perform well in the education, development and business activities of the economy. So country का विकास वहीं से सुनियोजित होता है. Now coming to second part of question, evaluate the agencies and techniques of population education in India. So you have to evaluate the agencies. Which are the agencies? We have various population policies. We also see there was emergency in 1975 which was against sterilization and forced move of Indira Gandhi government. तो ये भी चीजें रहती हैं. So agencies के बारे में पूछा जा रहा है and techniques of population education. So agencies, there is NSO, then there is Census Commission. So government of India every 11 years takes data from agencies and forecast the population and its performance from Ministry of Program Implementation, Copy and Ministry of Statistics. So ऐसे datas जब हम देखते हैं, then the economists are able to forecast the challenges of population, what are the dynamics in the population, what changes can be made in order to develop the business model. So there is ease of doing business. There is again education level and there is healthcare level. So recently we also see Ayushman Bharat Yojana.
आयुष्मान भारत योजना में 2 टियर और 3 टियर मॉडल पे अनेक प्रकार की सुविधाएं जो बुजुर्ग लोग घर में बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, उनको देने के लिए बनाया गया। ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ऑल्सो अ बिग इशू। सो रिप्रोडक्टिव एज कैसी है महिलाओं की, आर दे हेल्दी इनफ टू प्रोड्यूस गुड चाइल्ड हु आर having longevity, who are having productive life. So all these things to be included in your answer. So आशा करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शन। Structure. हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर डीलिंग विद द बीपीएससी सीरीज in Movishala platform. So the question coming on the front line is define structural contradiction and relationship with the breakdown of society. So this is one of the gravest question of sociological researchers and one of the question to learn and analyze. So why BPSC is asking such question? BPSC क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रही है? संरचनात्मक विसंगतियों को परिभाषित करिए और सामाजिक व्यवधान में इनके संबंधों का विश्लेषण कीजिए। सो डिफाइन स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन एंड एनालाइज रिलेशन विद द ब्रेकडाउन ऑफ सोसाइटी। व्हाई देयर इज स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन, और उससे पहले स्ट्रक्चर आप किसे कह रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देयर इज सोसाइटी इन विच देयर इज सुपर स्ट्रक्चर and there is a base is comprising of MOP which is equal to FOP plus ROP. मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो भी मोड्स हैं पैदा करने के, उनमें फैक्टर्स क्या क्या हैं और उनके रिलेशंस क्या क्या हैं, ये दोनों चीजें बेस बनती है। फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी देयर इज माइनिंग, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी दैट इज फैमिली एज अ बेस, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी इट इज रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी इट इज स्टेट। ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर ऑल बेसिस। So now this structure is having contradiction with the present scenario. Why it is so? Now there has been time changes and after the advent of modernity, समाज में अब क्या आ चुका है? मॉडर्निटी आ चुकी है। युवा आज का रैशनल है, आज का यूथ क्वेश्चनिंग है, आज का यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, आज का यूथ साइंटिफिक है। So as far as the education is reaching deeper to the youth is questioning each and every existing norms, existing values, and we saw the deviance in the gender also. There is LGBT and Q and I. There are different kind of gender orientation and sexual orientations. Why it is so? This is because the new system of youth is asking the question to the existing system at why there should be so much of a stereotype, and when the stereotype is questioned there is a contradiction. तब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है जब नए पढ़े लिखे समझदार लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये चीजें ऐसे क्यों हैं, why there are so much troubles with the religion, why there is a caste, why there is creed, why there is such institution of judiciary, why it is biased, why there is corruption. So ऐसी चीजें होने के बाद there is a contradiction. And in terms of employability, when it lacks the employment scenario, again the youth goes in frustration. So Weber says that Hindu society is lagging in terms of its values. Karl Marx कह रहे हैं कि Hindu society is status quoist. So आंसर में आप इन्हें कोट करिए। As per Karl Marx, the Indian society is again status quoist. Karl Marx, Indian society is
स्टैगनेंट, ये कैसी है, ये रुकी हुई है। फिर आ गए वेबर, वेबर जी ने दी ब्यूरोक्रेसी, बट इन टर्म्स ऑफ हिंदू सोसाइटी ये कह रहे हैं इट इज फ्रैगमेंटेड एंड स्ट्रेटिफाइड। फिर कौन से आ गए, एशियाटिक सोसाइटी में विलियम जोन्स कह रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी इज लेस प्रोग्रेसिव दो देयर इज सम मोबिलिटी। सो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं, संरचनात्मक विसंगतियों को प्रदर्शित कर रही हैं। सो नाउ एज देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन दिस फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी, ये कॉन्ट्राडिक्शन जब इमर्ज होते हैं ऑन द फेस ऑफ सोसाइटी, क्या हमें देखने को मिलता है, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, and this conflict leads to the clash between the present or modern youth or modern society against the traditional society. Yes, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस स्ट्रगल इज लीडिंग टू द राइज ऑफ न्यू ट्रेंड्स। वी सी देयर वाज a quest against war. Still, Russia is pushing war on the social scenario. We saw that there was quest for modernity, but still many African nations are still having traditional society. What is wrong in India is right somewhere else. What is right according to Western is wrong in India. Therefore, ऐसी परिस्थिति में structural contradictions emerge होते हैं। Now, I believe you understand the question very well. आप आंसर्स में ऐसे एग्जाम्पल्स कोट करें और राइट इट वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Okay, sir. ओके।